आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल सी एस स्टफ में। टुडेज वी डिस्कस अबाउट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग is a web server technology in which a user request is fulfilled by running scripting directly on web server to generate dynamic HTML pages। मतलब जब यूज़र कोई रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर के ऊपर जो स्क्रिप्ट रन करती भी होती है वो जनरेट करती है डायनेमिक HTML पेज को, उसको फुलफिल करती है यूज़र की रिक्वेस्ट को। And next, server-side programming. In many cases, client application will be insufficient due to heavy processing, communication with other client and data is available on server side only। इस वजह से तो जो है यूज़र रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे अपना प्रोसेस रन कराने के लिए। इट मे बी यूजफुल टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड प्रोसेस इट देयर। Number of technology are available for like CGI, Servlet, GSP, ASP, PHP, and others. The common three technologies are used to design server-side scripting is CGI, Common Gateway Interface, ASP, Active Server Page, JSP, Java Server Pages, like this। इन दिस फिगर आप देख सकते हैं कि स्टैटिक पेज यूज़र रिक्वेस्ट करता है फाइल के लिए, रिट्रीव फाइल में से सर्वर में से स्क्रिप्ट रन करके सेंड कर देता है सीधा फाइल। बट इन डायनेमिक पेज रिक्वेस्ट करता है, कंप्यूटेशन होती है, जनरेट होते हैं एचटीएमएल पेज एंड कंप्यूटेशन रिजल्ट जो होता है वो रिटर्न होता है यूज़र के पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Common Gateway Interface (CGI). CGI is a stands for Common Gateway Interface. CGI is a standard programming interface to web server that allow building dynamic and interactive websites. CGI is not a programming language; it's just a set of standard protocols. The standards specify how web application can be executed on the server side. मतलब सी जी आई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इस वेब एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। बट एनी सी जी आई कैन बी कन्वर्ट टू ए सी जी आई प्रोग्राम। इट जस्ट फॉलो ए सी जी आई रूल। द रूल्स डिफाइंस हाउ प्रोग्राम गेट एंड सेंड डाटाज communication protocol, that is how make sure web server know that a program is a CGI program. Now discuss about security issue with CGI. Publicly accessible CGI program allow anyone to run program on the server। मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई भी आन के अपना प्रोग्राम रन कर सकता है ऑन द सर्वर। malicious user you be able to exploit security breach and harm the server। एनी अनवांटेड यूज़र आन के सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है और हार्म कर सकता है सर्वर पे। बिकॉज ऑफ दिस many web hosts do not let ordinary user to create CGI program where the use of CGI is a permitted special wrapper program may be required that enhance security check and limit the CGI programmer permission। Now discuss about active server pages। Active server pages or ASP is a technology that enable the designer to make dynamic and interactive web pages। It means ASP टेक्नोलॉजी अलाउ करती है डिज़ाइनर को कि डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस बना सकता है। द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड for writing ASP is VB script, although the designer can use other scripting language like JScript, Microsoft version of JavaScript। Any web pages contain ASP cannot be run by just simply opening the page in a web browser। The page must be requested through a web server that support ASP। This is why ASP stands for Active Server Pages। मीन्स अगर आपको कोई पेज ओपन करना है इसके लिए आपका सर्वर एक्टिव होना चाहिए। नो सर्वर नो एक्टिव पेजेस। नाउ डिस्कस अबाउट जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस GSP is a technology that let the designer mix regular static HTML page with dynamically
generate HTMLs. In this जो डिज़ाइनर होता है वो अपने स्टैटिक HTML पेज का यूज़ करके डायनेमिकली उसके अंदर ऐड कर सकता है. Many web pages that are built in CGI program are mostly static, with the dynamic part limited to a few small locations. But most CGI variation, including servlet, make the designer generate the entire page via their program. Even though most of it is always the same. JSP lets the designer create two parts of separately. मतलब डायनेमिक पार्ट अलग बनता है और स्टैटिक पार्ट अलग बनता है. Now discuss about features of JSP. Platform and server independent होता है. Environment, extensible JSP tags होते हैं. Reusability across platform, easier maintenance, platform independence, like JSP technologies follow the right ones and run anywhere rules, which is based on the Java language. That is why JSP is also platform independent. Environment, this technology lets the designer separate content generate from layout accessing component from the page. मतलब डायनेमिक पेज अलग और स्टैटिक पेज अलग. एक्सटेंसिबल JSP टैग, JSP uses a combination of tag scripting to create dynamic web pages. It allows the designer to extend the JSP tag available. Reusability, the JSP pages uses components which are reusable. These reusable components help keep the page simple and run faster. Easier maintenance, application made using JSP technology are easier to maintain. Now the video is over. If you like my video, subscribe my channel for latest update. Thank you.